Hello everyone, my name is Nancy Gupta. Today I shall describe chapter Chemical Effects of Current, class 8th, part 1. So let's get started. Before continuing with the topic, please subscribe to my channel Nancy Study Hub. So let's get started. So you can see here we are starting with the chapter Chemical Effects of Current. Introduction. Electricity can be defined as a kind of energy formed by moving charges. Means हर चीज में या तो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं या नेगेटिव चार्जेस होते हैं. जब वो चार्जेस मूव करते हैं तो उसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है. So that means electricity is a kind of energy formed by moving charges. Metals are considered a good conductor of electricity due to flow of electric charges in them. That is, आपको पता ही है बहुत तरह के substance होते हैं. It could be metallic, non-metallic, conductor, insulator. So you should know कि metals जो होते हैं they are good conductors of electricity. Why? Because उसमें flow of electric charges बहुत अच्छे होते हैं. So that's why good conductor. Metals are good conductors of electricity. Why? Because of flow of electric charges in them. Electric current. It can be defined as flow of electrons. So this is very important. Electrons. Electric current क्या है? It can be defined as flow of electrons. An electric current can produce chemical, heating and magnetic effects. That is, electric current के वजह से तीन तरह के इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं. पहला है केमिकल इफेक्ट, नेक्स्ट है हीटिंग इफेक्ट एंड लास्ट वन इज mechanic, that is magnetic effect. So let's get started with each one of them one by one. Here in this chapter we will discuss about chemical effects of current. Due to flow of electrons, that is electric current. ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रिक करंट जब आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो उसके वजह से कि क्या केमिकल इफेक्ट्स ऑब्जर्व होंगे वो हम देखते हैं. You can see here these are red colored ball like structure और ये ball like structure को हम electrons कहते हैं. अगर आपको स्ट्रक्चर याद होगा, बीच में आपका न्यूक्लियस होता था, ठीक है, सेंटर में न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते थे, राइट, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. So in center you have protons plus neutrons, and outside the nucleus the electrons revolve, right? So due to flow of electrons, electricity conducts, and conductors, metals are good conductors of electricity. Why? Because of good electrons flow. Electric current cannot flow on its own. An electric circuit, which is a closed loop path made up of electric components like wire, battery, switch, bulb, etc., is needed for current to flow in a wire or conductor. So, इलेक्ट्रिक करंट कभी भी कंडक्टर में अपने आप नहीं फ्लो करता है. उसके लिए आपको एक प्रॉपर क्लोज्ड लूप पाथ बनाना पड़ता है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं लाइक वायर, बैटरी, स्विच, bulb, etc. is needed for current to flow in a wire or a conductor. मतलब अगर आपको वायर, कंडक्टर, स्विच, बल्ब इन चीजों को कनेक्ट करना पड़ेगा इन अ प्रॉपर क्लोज्ड लूप पाथ. क्लोज्ड लूप पाथ कैसे होता है आपको पता ही है. ये सपोज आपके बल्ब है, ठीक है, और यहाँ पर आपका एक बैटरी है, राइट, वन इज नेगेटिव टर्मिनल, वन इज पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, ये आपका सेल हो गया बैटरी, ओके, और फिर आप पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्रिएट कर लोगे, राइट, और फिर व्हाट यू विल सी ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक वायर, बैटरी, switch, bulb, etc., a closed loop path is
formed, एक पूरा closed loop path. अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी breakage होगा, incomplete circuit होगा, तो आपके electrons flow नहीं करेंगे. So this is closed loop path made up of wire, battery, switch, bulb, etc. This is required for current to flow. सिर्फ करंट के फ्लो करने से नहीं होता है, करंट को फ्लो करवाने के लिए आपको क्लोज लूप पाथ बनाना पड़ेगा. Based on conductivity, substances are divided into two. Number one, conductors. Number two, insulators. Substances that allows electric current to pass through them are called conductors. तो जैसा कि हमें पता है कि हर तरह के substance होते हैं. एक होते हैं poor conductor of electricity, that is those substances which does not allow electric current to flow through them is known as insulators. And the example of insulator is rubber, wood, plastic, glass, etc. These are bad conductors of electricity, whereas there are some substances that allows electric current to flow, आराम से easily pass through करने देता है. ठीक है, तो examples are gold, silver, copper, etc. are some examples of good conductors. So, do you know liquids conduct electricity? क्या आपको पता है? Yes, most liquids can conduct electricity because they have free electrons. क्यों फ्लो करते हैं? क्यों बहुत सारे जो लिक्विड्स होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. व्हाई? बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस दैट कैरी द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द लिक्विड. मतलब उसमें क्या चीज ऐसा प्रेजेंट है जिसकी वजह से आपका वो लिक्विड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है? प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आयंस दैट कैरी द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम. Solution of acids, bases and salts in water conduct electricity and hence are called electrolytes. तो आपको पता रहना चाहिए, अगर हम एक सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें एसिड्स है, बेसेस हैं एंड सॉल्ट्स हैं, ठीक है, ये तीनों अगर आप लेते हो, ठीक है, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी and hence are called electrolytes. Why they are called electrolytes? Because they conduct electricity. For example, lemon juice, sodium hydroxide, tap water, milk, vinegar. These are good conductors of electricity, hence they come in the category of electrolyte. And why they are good conductors of electricity? Because of presence of free electrons, ions. Okay? Yes, very good, very good. Whereas distilled water does not conduct electricity as it contains salts and hence distilled water is a bad conductor of electricity. Why distilled water is a bad conductor of electricity? Because it does not contain salts. Very important. उसमें salt नहीं होती है, नमक की मात्रा नहीं होती है, इसीलिए आपका distilled water क्या होता है? Bad conductor of electricity. Oil, petrol, kerosene are poor conductor of electricity as they do not have free electrons or ions to conduct electricity. This is very important. Oil, petrol, kerosene, ये सब poor conductors of electricity होते हैं. Why? Because they do not have free electrons, they do not have free ions to conduct electricity. Milk is a good conductor of electricity because it contains water and lactic acids. ठीक है, तो वो उसमें वाटर भी है और लैक्टिक एसिड भी है, इसीलिए मिल्क ओवरऑल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. व्हाई? बिकॉज उसमें वाटर भी है एंड लैक्टिक एसिड्स भी है. हाउ कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स कैन बी टेस्टेड? द कंडक्टिविटी ऑफ a liquid can be tested by a tester. Testers are used to test whether a particular material allows the electric current to pass through it or not. मतलब क्या उस कंडक्टर में से, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कैसे चेक करेंगे? एक टेस्टर से. ठीक है, फर्स्ट टेक अ लिक्विड लाइक लेमन जूस इन अ कंटेनर. व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through a conducting liquid, it gets composed into ions, and then we will come to know that it is a good conductor of electricity or bad conductor of electricity.
So we will continue with this topic in the upcoming video. Bye bye. Thank you.